Hello students. In last lecture, last session, we have discussed arithmetic pipeline. We also seen how arithmetic pipeline helps to achieve a parallel processing. Now in these sessions, I will continue our discussion with instruction pipeline. Okay, so we have seen this many things. Okay, so instruction pipeline. Now, what is instruction pipeline? In instruction pipelining, we'll read consecutive instructions from memory while previous instructions are being executed in other segments. Okay, so we know what is the process, basic process of instruction execution. Okay, how instructions are getting executed. So the basic process is instructions are getting fetched from the memory. Okay, and then decoded. That instruction is decoded, and then it based on the the operands are getting fetched, and then instructions are getting executed. Okay, so instructions are getting executed based on every instructions are passes from few phases. Okay, whether it is from the instruction fetch phase, then decode phase, then whether it is operand phase, fetch and other things, right? So there are total 6 phases through which every instructions are passes. Okay, so the first phase is fetch an instruction from the memory. Then the second phase is then decode the instructions. Okay, the third phase is calculate the effective address of the operand. What this phase means, we have seen in the CPU there are number of addressing modes. Okay, so we have also seen how we can calculate the effective address in other different addressing mode, right? So when there is a memory reference instructions, we need to calculate the effective address from where. From that effective address, our actual operand will be there, so we need to fetch operand from the memory. So that will be done in the fourth phase, that is fetch operand from the memory, then execute the operation, and at last sixth stage store the result in the proper place. Okay, so there are basically 6 phases through which every instructions are getting executed. Some of the instructions are not needed, some of the phases are not needed for the sum of instruction. Let's say this all 6 phases are needed when there is a memory reference instructions, right? But let's say if there are non-MRI instruction, non-memory reference instructions, okay, so they don't need to calculate, that instruction doesn't need to pass from the calculate effective address phase or fetch operand from the memory, because they don't require to fetch operands from the memory. So in that context, in that concern, some of the instructions doesn't want to pass from some of the phases. Okay, so we can combine some of the phases and we can prepare some segments where different operations or different phase operations are getting performed. Okay, so some of the instructions skip some phases. Effective address calculation can be done in the part of decoding phase, let's say. So effective address is needed to calculate if there is an MRI instructions. Okay, so we can do this thing, we can do is during the decode instruction, when we decode at the same phase, we can calculate the effective address. Okay, so we can combine 2 phases into a single phase. Fine. Okay, the same way storage of the operation result into a register is done automatically in the execution phase. So when we perform this execution, the result can be, we can store the result after once in the same segment. You can say in a one segment we can execute the operation, at the same time we can store the result to the proper place as well. Okay, so we can combine few phases and we can reduce this phases, or we can divide this phases number of 6 phases into 4 segments. Okay, we know why we need to divide something into segment, because say pipelines are getting the process through different segments. Okay, so what we'll do is in instruction pipeline, the design of instruction pipeline will be most efficient if the instruction cycle is divided into segments of equal duration. Okay, so if we divide different segments into a equal duration, so it will be a more effective if we provide to in terms of instruction pipelining, right? So let's divide our instruction, let's say for the basic computer, or let's say for the CPU general purpose computer that we have discussed, what are the number of instructions, what are the different addressing modes, and how how the instructions are getting executed. Okay, so let's divide that instruction into a 4-stage pipeline. Okay, as we have combined these 6 stages into we have combined this second and third and fifth and sixth. So we have divided our pipeline into a 4 stages, right? So let's discuss, let's assume that we have a 4-stage pipeline. So from each stage there will be something which is going to be processed, and it is forwarded to the next phase. Okay, so at last we'll be having execution. Fine. Okay, so
in this case, let's have a 4-stage pipeline. The first stage is FI, that is fetch instructions from memory. Second is decode the instructions and calculate the effective address of the operand. Okay, this is the two phases that we have combined, right? Then third phase, fetch operand from the memory, and fourth phase, execute the operation. This is the fourth stage through which every instruction is going to be passed. Okay, now let's assume the scenario. This is execution of 3 instructions in 4-stage pipeline. So there are, let's say, 3 instruction, I plus 1 location and I plus 2 location. There are 3 instructions. So how the instructions are getting executed in a pipeline manner? So this is what the example of conventional method. When conventional method, if we use, so first instruction is fetched from memory, then it is decoded, and the next segment the operands are getting fetched, and then it is getting executed, right? Okay, once the complete instruction, first instruction fetch and till it get executed, no instruction will be there in the pipeline manner, or there is nothing, there is no concept of pipeline in the conventional manner, right? So जब तक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता है, सेकंड इंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता है, राइट? Okay, so when as soon as the first instruction get executed, the next instruction is fetched from the memory, then it is decoded, and for operand is fetched. And so this is what a conventional method. You can assume that by how instructions are. So we know what is the benefit of introducing a pipeline. So this is the case, like in terms of instruction execution, this is the case how different instructions are getting executed, right? So if we introduce pipeline in instruction execution, okay, so what we can do is, when first instruction is there in the fetch instruction phase, first segment, okay, there is no other instruction which is there in the pipeline. As soon as the first instructions are passes to the second segment for decoding that instruction, the first segment is free. So what we can do is, the first instruction is decoded, at the same time we can fetch another instruction from the memory, right? So the same way, the first instruction is fetching address or operand from the memory, the second instruction is getting decoded, and we can fetch third instruction. Okay, so likewise we can introduce a pipeline in instruction as well. Okay, so this is what a basic concept of introduction of pipeline into instruction processing, right? Now this is what the flow chart which explains the same process that we have discussed. Okay, so instruction execution in 4-stage pipeline. What we do is, first we'll fetch the instruction. The first segment will fetch instruction from memory. Second segment decode instruction and calculate effective address. Now in that case, okay, now in that case if something, let's say, it's not, we have seen number of types of instructions. It's not like simply addition, subtraction or others. There are number of instructions which is available in general computers. Okay, so some of the instructions are memory reference instructions, some of the instructions are non-MRI instructions and other instructions, right? So no, there's some of the instructions like a branch instructions. No, we write some statements in, let's say, in assembly language, we write some statements where we perform some addition or arithmetic operations, and sometimes we jump to another location or if you have introduced a looping concept, so from first instruction to 10th instruction we go, and from 10th instruction we again jump to the first instruction and again execute the same state. Okay, so there are some branching instructions are there, and jumping instructions are there. Okay, so our programs are divided into that instructions. We've written in that instruction format, right? So we need to consider all kind of instruction when we executing instruction in a pipeline manner. We need to consider, let's say, first instruction will be a normal instruction, the next instruction will be of any type of instruction. Okay, so we need to consider all those things. Okay, so let's assume कि भाई after fetching or after decoding, let's say if we found that that is a branch instruction, so branch what will do, ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करता है? ब्रांच इंस्ट्रक्शन हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई जंप टू 101. लेट्स से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 100 we have executed something, or let's say we have started from 100 location and we have we have executed something with 110, and from 110 there is an instruction called jump instruction. So that jump instruction what will do, jump to, let's say, 201 location. Okay, so we need to change, we need to change our control to 201 location. So so for that reason what we need to do is, we need to
change the value of program counter, because the program counter contains the value of instruction which is going to be fetched from the memory. So next instruction which is going to be fetched from the memory. Okay, so if let's say if there is a branch instruction, yes, then we need to update the program counter value by the value which is provided with that instructions, right? Okay, but if it is not a branch instruction, if it is not a branch instruction, then we need to fetch an operand from the memory and then execute. Fourth statement will execute the instruction. If there is an interrupt situations or other situations, we need to handle that instruction. If no, then we'll again fetch the next instruction. Okay, so this is what a basic flow chart, how instructions are getting executed in a pipeline manner. Okay, so in this case, now let's assume that first instruction is there which is getting fetched from the memory, then decoded. So when first instruction is decoded in the decoding phase, the second instruction in the fetch is getting fetched from the memory. First instruction is when it is there in the third phase, that is what fetch operand phase. Okay, the second instruction is there in the decoding phase. So at the same time we can fetch the third instruction from the memory. Okay, now assume that first two instructions are normal instructions, so we can there is no problem with that कि भाई first instruction fetch हो गया, उसके बाद second instruction fetch हो गया, when it get first instruction go to the decoding phase, second instruction हमने fetch कर दिया. Now third instruction आया, third instruction वो fetch हो गया, fetch होया, उसके बाद कौन सा instruction है वो कब पता चलेगा? When it getting decoded. अगर decoding में जाएगा ना, decoding में जाएगा तब उसको पता चलेगा भाई कौन सा instruction है ना. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन थर्ड इंस्ट्रक्शन लेट्स एज्यूम कि भाई थर्ड इंस्ट्रक्शन ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, इट्स अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. लेकिन ब्रांच इंस्ट्रक्शन कब पता चलेगा हमें? जब वो इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा ना, ये जब इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा तब पता चलेगा भाई दिस इज व्हाट अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, है ना. सो जब थर्ड इंस्ट्रक्शन व्हेन थर्ड इंस्ट्रक्शन फैच तो हो गया, देन व्हेन थर्ड इंस्ट्रक्शन विल फॉरवर्डेड टू द डिकोडिंग सेगमेंट. सो डिकोडिंग में पता चलेगा भाई इट्स अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. सो जब ये डिकोडिंग में होगा एट द सेम टाइम, जब डिकोडिंग में हो तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच तो हो जाएगा मेमोरी में से, है ना. जब प्रोग्राम में जब ब्रांच इंस्ट्रक्शन आता है ना, तो हमें क्या होता है कि भाई जैसे पाँचवें स्टेटमेंट पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आए तो फिफ्थ स्टेटमेंट से हमें लेट्स से जो भी ब्रांचिंग का एड्रेस होता है वहाँ पे जंप करना होता है, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा जो भी होगा ना वो लोकेशन लेट्स से फिफ्थ स्टेटमेंट पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आया, या इन द केस कि भाई थर्ड स्टेटमेंट पे ब्रांच इंस्ट्रक्शन आया, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन में मतलब भाई ब्रांच टू और जंप टू 10th मेमोरी एड्रेस, राइट, मेमोरी. तो सो 10वीं लोकेशन पे हमें इंस्ट्रक्शन फैच करना होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. लेकिन इन दिस केस क्या होता है, पाइपलाइन मैनर में होगा. सो जैसे ही वो डिकोड में जाएगा तब यहाँ तक तो हमें पता नहीं है कि भाई वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, तो उसमें क्या होगा कि भाई फोर्थ नंबर वाला इंस्ट्रक्शन यहाँ से फैच हो जाएगा, है ना. ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फैच हो गया ऑलरेडी, विच इज़ जो हमें नहीं करवाना था. सो पाइपलाइन में ये सारी चीज़ें होती है वो जो कंसिडर करनी होती है, राइट. सो at that time when something happens, let's say यहाँ पे decode हुआ, then it comes to know that okay it's a branch instruction, so we need to update the value of program counter. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू अपडेट करनी होती है. वी नीड टू एम्प्टी द पाइपलाइन को फिर एम्प्टी करना है. सो जैसे ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन आया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी फैच हुआ ना, तो यहाँ पे पाइपलाइन को एम्प्टी कर दिया ना. तो कंट्रोलर को या कंट्रोल यूनिट को पता होता है कि यहाँ यू नीड टू एम्प्टी द पाइपलाइन, क्योंकि इट्स अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. सो ब्रांच इंस्ट्रक्शन में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू नई है सेट हो गई. लेट्स एज्यूम कि भाई 10वें लोकेशन पे जाना है, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 10 सेट कर दी है. सो यहाँ से थर्ड के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा फैच होगा? हाँ, ये फोर्थ नंबर वाला नहीं. दिस इज व्हाट इंस्ट्रक्शन, न्यू इंस्ट्रक्शन विच इज़ गेटिंग फैच, है ना. न्यू इंस्ट्रक्शन विच इज़ गेटिंग फैच विच इज़ फ्रॉम 10th लोकेशन. एज्यूम कि भाई 10वीं लोकेशन पे मेमोरी लोकेशन पे वो इंस्ट्रक्शन न्यू लोकेशन फैच हुआ, देन वो डिकोड हुआ. देन एट द सेम टाइम दिस इंस्ट्रक्शन विल बी इंस्ट्रक्शन ऑफ 11th. यहाँ से भी यहाँ पे भी ये पाइपलाइन जो है ना, ये पाइपलाइन भी हम कुछ नहीं करवाएंगे यहाँ से, बिकॉज एट दिस लोकेशन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. जब तक वो ब्रांच एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग. एट दिस स्टेज वी हैव फैच न्यू इंस्ट्रक्शन, एंड फ्रॉम दिस लोकेशन विल बी फैचिंग 10th के बाद 11th नंबर, 12th नंबर, यहाँ से 12th नंबर आएगा, 13th नंबर आएगा, एंड लेट्स से समवेयर 13 नंबर के बाद वापस जंप आया, जंप टू 4th लोकेशन. ओके, सो जंप यहाँ से वापस हम पाइपलाइन एम्प्टी करेंगे और नया इंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है विल सेट टू द 4th लोकेशन. सो उसके बाद विल जंप बैक टू द 4th लोकेशन, और 4th लोकेशन का जो इंस्ट्रक्शन होगा
वो इंस्ट्रक्शन हम फैच करवाएंगे यहाँ से, ठीक है। सो इन दिस मैनर पाइपलाइंस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन अ नॉट पाइपलाइंस, इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन अ पाइपलाइन मैनर, okay. So if we introduce or if we implementing a pipelining concept in a instruction, for the instruction executions we need to take care of every situations, every possible conditions based on every instructions, right? Okay, so there are possibilities of number of hazards in a pipeline. So hazards is something which when your something is not happening as per our expectation, no, then we call it as hazard. Hazard means some situations which is not acceptable, और कुछ ऐसा situation जहाँ हमारा कुछ भी disturb होता है, ठीक है. Okay, so there are possibly three kinds of hazards. The first is structural hazard, data hazards and control hazards. Structural hazards क्या होता है कि structural hazards are causes due to a resource conflict. Resource conflict that means अगर हमारे पास पाइपलाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन इफ़ वी डोंट हैव ए इनफ नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट अ पाइपलाइन, देन देयर विल बी ए पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन अ रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट. दैट मीन्स व्हाट कि भाई लेट्स से पाइपलाइन मैनर में हमारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मान लो नाउ इंस्ट्रक्शंस जो पाइपलाइन मैनर में हो रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन तो फैच हो गया, वो डिकोड में गया, तो सेकंड इंस्ट्रक्शन भी फैच हो गया. जब वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड से फैच ऑपरेंड के लिए जा रहा है, सो फॉर इंस्ट्रक्शन फैचिंग इट एक्सेस द मेमोरी एंड फॉर ऑपरेंड फैच इट ऑल्सो एक्सेस द मेमोरी, राइट. सो देर इज़ नो प्रॉब्लम. लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ट्राइंग टू फर्स्ट सेगमेंट में इट विल एक्सेस मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन फैच, डिकोड करेगा, देन इट विल एक्सेस मेमोरी फॉर ऑपरेंड फैच. नाउ एज्यूम कि सेकंड इंस्ट्रक्शन जैसे पाइपलाइन मैनर में है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे डिकोड में या फर्स्ट सेकंड इंस्ट्रक्शन इज देयर इन विच इज एक्सेसिंग मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन फैच. एट द सेम टाइम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब ऑपरेंड फैच के लिए गया थर्ड स्टेटमेंट में, है ना, इट इज एक्सेसिंग अ मेमोरी फॉर फैचिंग एन ऑपरेंड. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एक्सेस कर रहा है मेमोरी, एट द सेम टाइम सेकंड इंस्ट्रक्शन इज देयर इन अ डिकोड फेज एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन इज देयर इन अ विच फेज, third instruction is there in a memory phase. Now assume this scenario, if we don't have a number of memory, enough number of memories, कि सिंगल ही एक मेमोरी, छोटी सी मेमोरी है और रिसोर्सेज मतलब लेट्स से मेमोरी रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, सो क्या होगा कि अगर एट द सेम टाइम first instruction is accessing the memory for operand fetch, at the same time third instruction is trying to access the same memory for instruction fetch, यहाँ पे दोनों एक साथ में memory access कर रहे हैं, then it will possibly create a conflict. रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट इसको बोलते हैं कि भाई रिसोर्स प्रॉपर रिसोर्सेज ना होने की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, कि भाई पहला इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस कर रहा है फॉर द ऑपरेंड फैच, एट द सेम टाइम नो द थर्ड इंस्ट्रक्शन इज ट्राइंग टू एक्सेस द सेम मेमोरी फॉर द इंस्ट्रक्शन फैच, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना. इफ़ यू डू नॉट हैव enough number of resources, then there will be a possibility of getting hazards. Okay, so that kind of hazard is known as a structural hazard. Okay, now the second type of hazards are data hazards. Now this kind of hazards are mainly caused ड्यू टू अ डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट, है ना. कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है ना, उसके रिजल्ट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है, दैट इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन अ रिजल्ट और ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस. इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं. फॉर एग्जांपल कि भाई इंस्ट्रक्शन शेड्यूल टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ पाइपलाइन रिक्वायर्स द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन विच इज़ नॉट येट अवेलेबल. अगर नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड में होता है तो क्या होता है कि भाई पहला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद ही दूसरा स्टार्ट होता है, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे क्या हो रहा है पाइपलाइन में, है कि पहला इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो नेक्स्ट सेगमेंट में है, तभी हम फैच करवा रहे हैं और दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं पैरेलल मैनर में, ठीक है ना. सो अगर व्हाट इफ़ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, है ना, तो तब क्या हो सकता है. तो लेट्स अज्यूम कि भाई देयर आर टू इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट एंड सेकंड. सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, बी प्लस सी, एंड उसका रिजल्ट जो है वो R1 में जाएगा, ठीक है. सो ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से बनेगा कि भाई विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज़, कि भाई प्लस यहाँ पे लिखा है, डेट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इट इज़ एन एडिशन इंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ एड्रेसिंग किसका है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है, देयर इज मोड, एड्रेसिंग मोड है DA, डेट इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ऑपरेंड की वैल्यू है B एंड C एंड हमें एग्जीक्यूट करना है प्लस एडिशन करना है, ठीक है. नाउ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट व्हेन इट इज़ गेटिंग एग्जीक्यूटेड इन अ पाइपलाइन मैनर, तो व्हेन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, उसके बाद जो डिकोडिंग में गया, देन एट दैट टाइम, है ना, यहाँ पे हमें पता चला कि भाई R1 + 1 करना है हमें,
तो सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि R1+1, तो R1 की वैल्यू क्या होगी, है ना। मान लो अगर यहाँ पे ये यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं किया है बबल, विल डिस्कस व्हाट इज़ बबल, क्योंकि बबल पाइपलाइन में एज्यूम कर सकते हैं भाई, पाइपलाइन में जब बबल आता है, कोई पाइपलाइन फ्लो होता है पानी, उसमें से कुछ बबल आ जाता है, या नो वी हैव सीन समथिंग, तो बबल किस तरह से वहाँ पे कुछ भी नहीं होने देता, वी डजंट अलाउ टू पास वाटर फ्रॉम दैट बबल, है ना, बबल पूरा निकलता रहता है इस तरह से। ओके, सो सेकंड इंस्ट्रक्शन इन दिस केस R1+1, उसका मतलब कि R1 का जो रिजल्ट आएगा, वी हैव रिटर्न, किसी ने यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से क्यों लिखा होगा, क्योंकि उसको कुछ अपडेटेड वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है ना। B+C जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी देयर इन R1, और उसके रिजल्ट के बाद फिर उसको R1+1 उसको इंक्रीमेंट करवाना है। अगर हम पाइपलाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यू नो देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि हमें B+ का रिजल्ट जब पाइपलाइन में कहाँ जाएगा, एट दिस स्टेज जब एग्जीक्यूट होगा एट दैट टाइम इट विल गो इनटू अ पाइपलाइन, उसका रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट R1 में जाएगा। बट यहाँ पे ये जो केस है ना, जब डिकोड होने के बाद यहाँ जब अगर यहाँ पे प्रोसेस करवा दिया होता ना, ये बबल इंट्रोड्यूस नहीं किया था, और यहाँ पे जब बिफोर इट गेट एग्जीक्यूटेड, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गेट एग्जीक्यूटेड, हमने अगर R1 को प्लस करवा दिया होता, तो ये R1+1 क्या होता कि R1 की जो पुरानी वैल्यू होती उसके अंदर कुछ एडिशन इंक्रीमेंट कर दिया होता, है ना। लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक्चुअल, हमारा इंस्ट्रक्शन ऐसा चाहिए कि हमें एक्चुअली में उसको जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट उसमें R1 में अपडेट हो जाए, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करवाना है। सो वी कैन इंट्रोड्यूस, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, बबल इंट्रोड्यूस हुआ उसका मतलब उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर नहीं बबल इंट्रोड्यूस होते तो पाइपलाइन हमारी रॉन्ग हो जाती, समझ रहे हो, पाइपलाइन हमारी रॉन्ग हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, हमारा इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करने का एक्सपेक्टेशन था पाइपलाइन मैनर में, वो पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो वी नीड टू टेक केयर दिस सिचुएशंस एज वेल, ओके, वी नीड टू डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ हजार्ड्स एज वेल, है ना। अगर डेटा हमें इंस्ट्रक्शन है तो इफ़ देर आर डेटा डिपेंडेंसी इन इंस्ट्रक्शन वी नीड टू डिटेक्ट इन प्रायर टू एग्जीक्यूट दैट पाइप इन पाइपलाइन मैटर, राइट। सो डेटा डिपेंडेंसी कौन कौन सी है उसको हमें पहले डिटेक्ट करनी होती है, और उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के बाद फिर वी नीड टू एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन इन टू अ पाइपलाइन मैटर, ओके। सो द वन सॉल्यूशन इज वी कैन इंट्रोड्यूस अ बबल, दैट मीन्स व्हाट, हर एक ये से देखो हर एक ये सेगमेंट जो है ना, हर एक क्लॉक साइकिल पे ये सेगमेंट्स चलते हैं, ठीक है। सो अगर हमने एक क्लॉक पल्स या क्लॉक साइकिल को हमने स्टोल कर दिया, दैट मीन्स हमने छीन लिया, तो वी हैव इंट्रोड्यूस बबल, दैट मीन्स व्हाट, इट विल नॉट डू एनीथिंग ड्यूरिंग दैट क्लॉक साइकिल व्हेन द बबल इज इंट्रोड्यूस, है ना। किसी भी पाइपलाइन में बबल होता है ना, तो बबल के अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है, बबल के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स व्हाट, ड्यूरिंग दिस साइकिल बबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसका मतलब कि इट विल नॉट परफॉर्म एनीथिंग, ओके। सो इट इज़ काइंड ऑफ वेस्टिंग ऑफ साइकिल, इट्स फाइन, इट इज़ नीडेड एक्चुअली ना, we can waste some of the cycles to achieve our proper processing, right. So bubble जो है वो introduce किया, that means what, at that time it will stall that पाइपलाइन में कुछ नहीं करेगा और वो वेस्ट करवाएगा। एक साइकिल वेस्ट हो गया तो क्या होगा कि भाई R1 जो नेक्स्ट है ना, जो डेटा डिपेंडेंसी यहाँ पे वेस्ट हो गया, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एक साइकिल वेस्ट करने से वजह से ये पूरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, दैट मीन्स उसने R1 की वैल्यू अपडेटेड कर दी, एंड यहाँ पे फिर हमने R1 को फैच किया जो दैट इज़ अ अपडेटेड वैल्यू। हाँ, हमने इंट्रोड्यूस किया पाइपलाइन को, दो पाइपलाइन या वेस्ट करवाया, एक पाइपलाइन स्टोर जो कहते हैं ना कि पाइपलाइन को स्टोर करवाया, एक साइकिल दो साइकिल हमने वेस्ट करवाई, उसकी वजह से हमने क्या किया कि वी गॉट अ अपडेटेड वैल्यू ऑफ R1। सो हमारा सेम मैनर पाइपलाइन मैनर में हमारा इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। सो इंट्रोड्यूसिंग अ बबल इनटू अ पाइपलाइन, दैट मीन्स व्हाट, वी आर स्टोलिंग दैट पाइपलाइन, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर वेस्टिंग आवर साइकिल, we are simply waste of instruction cycle, इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। ये इट्स नॉट इसकी ज़रूरत थी एक्चुअली, यहाँ पे हमें वेस्ट करना पड़ता है, अगर नहीं करते तो हमारा पाइपलाइन जो है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब इट मे हैव प्रोड्यूस सम डिफरेंट रिजल्ट विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, है ना। तो that kind of hazards are possible, so we need to take care of that hazards as well, okay. And the third type of hazard is a control hazard. So it branches and other instruction that change the program counter, PC make the fetch of the next instruction, okay. So if there are control hazards are like the control अगर change हो रहा है, control change हो रहा है, that means what कि हमारा 1 to 5 पे जा रहा है कंट्रोल, नॉर्मली 1 to 5 जा रहा है, लेकिन
स्टेटमेंट से अगर ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो वी नीड टू चेंज आवर कंट्रोल और वी नीड टू चेंज टू आवर प्रोग्राम काउंटर वैल्यू टू द 10th लोकेशन, लेट्स से। ओके, सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग का जो कंट्रोल चेंज हो रहा है, अगर वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट नहीं करवाया तो हमने देखा प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में कि किस तरह से यहाँ पे ब्रांच आ रहा है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, वी हैव एम्प्टी किया उस दैट मीन्स सॉल्यूशन। अगर नहीं करते तो हमने ब्रांच इंस्ट्रक्शन के बाद हमें 10th नंबर का होता, लेकिन पाइपलाइन मैनेजर में हमने 4th नंबर वाला ही फैच कर दिया होता है ना। सो इट मे हैव no, if we don't have handle that kind of hazards, so it may our pipeline may fail, right? So यहाँ पे भी बबल किस तरह से वी हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड, वी हैव सीन कि भाई किस तरह से हमने पाइपलाइन को एम्प्टी किया। पाइपलाइन को एम्प्टी करना उसका मतलब या वी हैव इंट्रोड्यूस अ बबल इनसाइड द पाइपलाइन। बबल इंसर्ट करना दैट मीन्स वो उसको पाइपलाइन एम्प्टी करना, इस तरह से बोले। लेकिन ये सिर्फ दिस आर द थिंग्स विच इज़ फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो I think I'm making some sense through this. Okay, so there are basically 3 types of hazards: structural hazards, data hazards, and control hazards. We need to handle this hazard. Okay, so if we want to have a graceful termination, or if we want to have let's say if we want our pipeline should perform as per our expectations, we need to handle this kind of hazards as well. Okay, so this is what an example of data hazards. This is what I think we have discussed this thing, add r1 r2 r3 sub r4 r1 and r5. Okay, so first instruction is going to add r2 और r3 and result is going to be there in r1, and subtraction में क्या होगा कि r1 को हमें r5 से सब्सट्रैक्ट करना है, देन रिजल्ट उसका r4 में डालना है। लेकिन जब ये पाइपलाइन मैनेजर में एग्जीक्यूट होते हैं तो जब तक ये कंप्लीट सेगमेंट्स में से पास नहीं होता है तब तक उसका रिजल्ट r1 में नहीं जाएगा, और पाइपलाइन मैनेजर में ये इंस्ट्रक्शन हो ही जाता है। ठीक है, सो देर आर 2 काइंड ऑफ हैंडलिंग हजार्ड्स को क्या होता है कि हैंडल करना होता है। सो देर आर 2 काइंड्स ऑफ टेक्निक्स टू हैंडल द हजार्ड, दैट इज़ फॉर हार्डवेयर टेक्निक एंड software techniques. Okay, so hardware technique में क्या होगा कि भाई we can have a introduce a interlock. So hardware detect the data dependency delay and delay the scheduling of the dependent instructions by stalling enough number of cycles. Okay, so interlock, that means what we have designed our hardware in the such a manner that it is capable of identifying data hazard, data dependency of between instructions. Okay, and उसके पेजेस पे वो instruction cycle को block कर सकता है। और the second one is the forwarding. फॉरवर्डिंग उसका मतलब बाईपासिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। उसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्डिंग भी कुछ इस तरह से होता है कि भाई नो यहाँ से मान लो कि भाई बी और सी की वैल्यू तो हो गई, यहाँ से अगर हमने डायरेक्टली इसको फॉरवर्ड कर दिया होता ना, अगर यहाँ से फॉरवर्डिंग उसका मतलब क्या होगा कि वी डोंट वेट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ना, या फिर एक फेज़ यहाँ से नेक्स्ट फेज़ की वेट ना करो, यहाँ से डेटा हमारा जो आ गया जस्ट फॉरवर्ड दिस डेटा ना यहाँ पे। सो यहाँ से फॉरवर्ड हो जाता तो थर्ड स्टेज में से ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के सेकंड फेज में उसको डेटा फॉरवर्ड कर दिया तो उसने r1 की वैल्यू नहीं मिल सकती थी हमें। ठीक है, तो we would have wasted. So forwarding is that kind of technique. Okay, so it is accomplished by a data path that routes a value from a source, usually a ALU, to user, bypassing a designated register. This allows the value to be produced to be used at an earlier stage in the pipeline than would otherwise be possible. Okay, so उसका मतलब ये ही हुआ कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के कुछ भी इन बिटवीन कुछ चारों स्टेज में से पास कर रहे हैं तो विल नॉट वेट फॉर द एट द एंड ऑफ दिस थिंग्स ना, उसके थर्ड स्टेज में से ही डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। अगर हमने थर्ड स्टेज में ही हमारे जो पॉसिबली रिजल्ट कैलकुलेट हो गए हैं, ठीक है, तो उसको हमने थर्ड स्टेज में से ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हो जाए तो एक पाइपलाइन एक साइकिल हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी वो हो जाता तो दैट कैन बी सॉल्व। ओके, सो दिस आर द हार्डवेयर टेक्निक्स थ्रू विच ये डेटा हजार्ड जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। एंड देयर इज द सॉफ्टवेयर टेक्निक्स कॉल्ड इज इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। ओके, सो कंपाइलर फॉर और मतलब कंपाइलर विल टेक केयर ऑफ दिस शेड्यूलिंग, इंस्ट्रक्शन किस तरह से शेड्यूल करना है, किस तरह से ये होता है। ओके, सो कंपाइलर विल टेक केयर ऑफ इट फॉर डिलेड लोड भी है इस तरह से कि भाई कंपाइलर उस खुद से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन डिटेक्ट करता है जो डेटा डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में डेटा डिपेंडेंसी, सेकंड में थर्ड इंस्ट्रक्शन में डेटा डिपेंडेंसी है तो कंपाइलर क्या करता है कि एक पूरा ऐसा इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस कर देता
ऐसा इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया कि जो इंस्ट्रक्शन इट इज़ अ वेस्ट ऑफ साइकिल, सिर्फ वेस्ट ही करता साइकिल, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ इंस्ट्रक्शन साइकिल की वो वेस्ट करवाता, ठीक है. सो विल सी इन रिस्क पाइपलाइन एज वेल इन 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 नेक्स्ट वीडियो, लेट्स से प्रोबेबली, कि किस तरह से डिलेड लोड काम करता है, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज व्हाट अबाउट डेटा हजार्ड्स. ओके, देयर विल बी अ कंट्रोल हजार्ड. सो ब्रांच इंस्ट्रक्शन हमने किस तरह से किया ना, तो ब्रांच टारगेट एड्रेस इज़ नॉट नोन अनटिल द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीटेड. ओके, तो कौन से इंस्ट्रक्शन पे ब्रांच करवाना है हमें नहीं पता चलता कब तक, जब तक वो एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूट होता है तब तक उसको एड्रेस ही, कौन से एड्रेस पे ब्रांच करवाना है उसके सारे अपडेटेड प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू तब अपडेट होगी, ठीक है. सो टिल देन वी नीड टू स्टोर वेस्ट ऑफ साइकिल्स ना, हमें वेस्ट किया था जैसे हमने वो देखा प्रीवियस एग्जाम्पल में. फाइन. सो इट वॉज अबाउट इन नॉर्मल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग. Okay, the next is risk instruction pipeline. Okay, so I will create one more video for this risk instruction pipeline. Okay, so this is up to this this is what our main concept which is there in our syllabus, and these are the few advanced concepts that we will simply discuss for our understanding, right? So in next video I will be discussing on risk pipeline. Fine. Till then, take care, have a good health, stay healthy, stay happy. Fine. Okay, see you in the next video. Thanks for watching.